area population was primarily attracted to the religious reform movement of 19th century. मतलब किस कैटेगरी को ये अट्रैक्ट किया? तो देखा जाए पहला ऑप्शन इंटेलेक्चुअल. द 19th century सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वेर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न एजुकेशन, रेशनलिज्म एंड लिबरल फिलोसफी. रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज. देखिए ब्रह्म समाज 1828 में, आर्य समाज 1875 में, रामचंद्र मिशन 1897, लेकिन ऑफिशियली वो हुआ 1909 में. बिलोंग टू द इंटेलेक्चुअल क्लास and sought promote scientific reasoning and social justice. They were inspired by European thinkers such as Voltaire, Rousseau and John Locke. Example, Ishwar Chand Vidyasagar ji used Vedic text to advocate widow remarriage. 1856 Lord Canning ने इसको वो किया था. Urban upper caste. These reform movements were mainly led by upper caste educated Hindus who were exposed to Western ideas in cities like Calcutta, Bombay and Madras. Many urban elites supported abolition of sati 1829, Women's Education and Widow Remarriage Act 1856 ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से. पुअर ordinary class नहीं. The lower class were not significantly impacted by these movements initially. These movements were more elite driven and lacked widespread appeal among peasant and laborers. However, later leader like Jyoti Rao Phule, Satyasodhak Samaj 1873, B.R. Ambedkar ji, Dalit rights movement brought reform efforts to the oppressed sections. Liberal princes, some progressive princely rulers supported reforms. Maharaj Sayaji Rao Gaikwad of Baroda supported women's education and modern administration. Raja of Travancore promoted temple entry movements. Intellectual urban elites and some liberal rulers were main supporters of these movements. Assertion and reasoning on social religious movement of the 19th century resulted in the modernization of India. Socio-religious movement of 19th century resulted in the modernization of India. बिल्कुल सही है. The 19th century reform movement modernized India society by abolishing sati 1829, legalizing widow marriage 1856, raising age of consent 1891 and 1929. 1929 वाले को शारदा एक्ट भी कहते हैं. Introducing English education which created Indian middle class consciousness, promoting scientific temper and rational thinking. जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, एम्पावरिंग वुमेन, पंडित रमाबाई, एजुकेशन मूवमेंट इंकरेजिंग नेशनलिज्म. Ideas of Swaraj and self-reliance came from reformists like Dayanand, Saraswati and Vivekananda. Rationalism and scientific temper and other such ideas which are the basis of modernization were at the core of socio-religious movement. बिल्कुल सही है. These movements were based on enlightenment ideas. Brahmo Samaj rejected ideal worship and polytheism. Arya Samaj promoted Vedic learning over rituals. Ramakrishna mission spread Vedantic rationalism. Ramakrishna mission, Arya Samaj, Vedic learning over rituals. ठीक, तो ये दोनों सही है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है. Which class was first influenced by Western civilization? Which class? तो मतलब रिच सारे ही लगभग हुए थे. नोबल लैंडलॉर्ड्स. द लैंडलॉर्ड्स वेयर ऑफन कंजर्वेटिव. ये लोग कंजर्वेटिव थे. और अच्छा, सबसे पहले पूछा है द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, वेयर ऑफन कंजर्वेटिव एंड रेसिस्टेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस. Many supported British rule for personal benefit. New rich merchants. Some Indian merchants in Bombay, Calcutta and Madras benefited from British trade policies. However, they were not first group of influenced by Western civilization. Educated Hindu middle class. English educated Hindu middle class emerged in the early 19th century due to Macaulay's education policy 1835. English educated Hindu middle class. English educated Hindu middle class
emerged in the early 19th century due to Macaulay education policy 1835 introduced Western curriculum in schools. ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शुरू किया था मैकाले ने. हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता राजा राम मोहन राय जी की मदद से खुला. एल्फिंस्टन कॉलेज 1835 बॉम्बे. एल्फिंस्टन कॉलेज. रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन एंड एम.जी. रानाडे were product of Western education. This class was highly influenced by rationalism, humanism and democracy. Educated Muslims. Initially, Muslims resisted Western education due to fear of British cultural domination. Sir Syed Ahmad Khan, Aligarh movement 1875 later encouraged modern education among Muslims. तो इसका अर्थ क्या, कौन सा आंसर है? एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? राजा राम मोहन राय जी. हाँ, राजा राम मोहन राय जी. स्वामी विवेकानंद revived Hindu spirituality, promoted Vedantic nationalism. His speech at the Chicago Parliament of Religions 1893 made him an international figure. However, he did not initiate early 19th century reforms. Raja Ram Mohan Rai called the father of Indian Renaissance due to abolition of Sati 1829, formation of Brahmo Samaj 1828, which rejected ideal worship and caste discrimination. Brahmo Samaj. Promotion of English education, advocacy of women's rights. He bridged India's past with modern ideas, earning him with the title Yugdut. Formation of Yugdut. Messenger of the age. राजा राम मोहन राय जी. युगदूत. रविंद्रनाथ टैगोर जी, a great poet, philosopher and nationalist, but not a 19th century reformer. First non-European to win Nobel Prize in Literature 1913. Dayanand Saraswati ji founded Arya Samaj 1875, promoted Vedic revivalism, coined the term Swaraj, which later influenced freedom fighters. However, his role was more religious revivalist than Renaissance like social reform. अब ये देखते हैं हम लोग. ब्रह्म समाज 1828 monotheism, opposed casteism and widow remarriage, rationalism, women's right. Arya Samaj go back to Vedas. Arya Samaj Dayanand Saraswati ji against ideal worship, education, नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स. रामकृष्ण मिशन 1897 में फाउंड किया गया. वेदांत, हिंदू यूनिटी सर्विस, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म. सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा. अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट और इम्पैक्ट क्या हुआ? कास्ट इक्वलिटी. थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लॉन्डवेट्स्की और एक लोग और थे. थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 हिंदू रिवाइवलिज्म एंड स्पिरिचुअल यूनिटी, कल्चरल अवेकनिंग के लिए काम किया. हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? राजा राम मोहन राय जी. अच्छा सॉरी हाँ, राजा राम मोहन राय जी. गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता था? ए मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, प्रमोट सोशल सर्विस. To promote social was Mahatma Gandhi's political mentor, advocated constitutional reform and gradual independence. Though a key nationalist, he is not considered as father of nationalism, Indian nationalism. Bal Gangadhar Tilak, known as father of Indian unrest. Bal Gangadhar Tilak को father of Indian unrest कहा जाता है. Led extremist nationalist movement in the early 20th century. Father of Indian unrest. Coin Swaraj is my birthright. I shall have it. बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. जॉन चेरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. स्वराज में दो ही प्लेड ए वाइटल रोल इन मास नेशनलिज्म, द अर्ली फेस ऑफ नेशनलिज्म 19th century was led by राजा राम मोहन राय. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ए प्रिकर्सर टू द INC। ये 1867 में बना। एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। दो इम्पॉर्टेंट his contribution came after Raja Ram Mohan Ray's early nationalist vision. The correct answer is Raja Ram Mohan Ray is considered father of Indian nationalism, advocated political right, freedom of speech, religious reform, opposed colonial economic exploitation and promoted press freedom. His effort laid groundwork for later nationalist movement. Who is called the father of Indian nationalism? Raja Ram Mohan Ray ji. Considered father of Indian Renaissance, founded Atmiya Sabha 1815 में, Brahmo Sabha 1828 में to modernize Hinduism, advocated abolition of Sati 1829, widow remarriage and women's right, brought rationalism and humanism into Indian society. Swami Vivekananda ji popularized Hindu spiritualism and nationalism through Chicago speech 1893. Founded Ramakrishna Mission 1897 में, revived Hindu pride but focused more on spiritual revival than socio-religious reforms. Ramakrishna Paramhans, a mystical teacher, emphasized bhakti and spiritual awakening. His teachings influenced Swami Vivekananda. He did not actively promote social reform. Dayanand Saraswati ji founded Arya Samaj 1875 and advocated back to the Vedas, opposed ideal worship, caste discrimination and superstitions, focused more on religious purification than a broad social renaissance. Who was the father of Indian Renaissance movement? Raja Ram Mohan Ray ji. Who was the leading envoy of Renaissance movement in India? To Raja Ram Mohan Ray ji. ऑप्शन देखा जाए, देवेंद्रनाथ टैगोर लेड द ब्रह्म समाज आफ्टर राजा राम मोहन राय जी। मतलब राजा राम मोहन राय जी के बाद ब्रह्म समाज को मतलब लीड करने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे और केशव चंद्र सेन जी थे। केशव चंद्र सेन, रिफॉर्मर ऑफ ब्रह्म समाज, फोकस्ड ऑन वुमेन्स राइट, मैरिज लॉज एंड एजुकेशन, एडवोकेटेड इंटरफेथ हार्मोनी बट वॉज नॉट द पायनियर ऑफ रिनेसेंस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जो रीमैरेज एक्ट हुआ था 1856, लॉर्ड कैनिंग ने वो किया था, वो इन्हीं की वजह से। क्रूसेडर ऑफ विडो रीमैरेज एंड वुमेन्स एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द विडो रीमैरेज एक्ट 1856, a reformist leader but not the overall Renaissance pioneer. Raja Ram Mohan Ray ji, first major social reformer and founder of modern Indian thought, pioneered religious, social and educational reforms. Who is considered the prophet of nationalism? तो Raja Ram Mohan Ray ji. Mahatma Gandhi ji, leader of modern Indian nationalism, championed non-violence and mass mobilization. His contribution came late after Raja Ram Mohan Ray ji. Raja Ram Mohan ji, first Indian to promote nationalism through religious reforms, advocated freedom of the press and Indian self-governance. Tagore ji wrote Janagan Man, India's national anthem, criticized aggressive nationalism, instead promoted cultural नेशनलिज्म। इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म की बात की कि इसको प्रमोट कीजिए। दयानंद सरस्वती जी कॉल्ड फॉर स्वराज एंड वैदिक रिवाइवलिज्म बट फोकस्ड मोर ऑन रिलीजियस रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय जी, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस एंड नेशनलिज्म, आत्मीय सभा 1815, फर्स्ट रिफॉर्म सोसाइटी, ब्रह्म सभा 1828, मोनोथिज्म, वुमेन्स राइट, एजुकेशन, social reform, abolition of sati 1829, widow remarriage act 1856. Legacy, influenced Indian nationalism and modernization. The first society founded by Raja Ram Mohan Ray ji was Atmiya Sabha 1815, Calcutta में by Raja Ram Mohan Ray ji. First intellectual reform society in India discussed monotheism, reason-based religion and social issues like sati and caste discrimination. Precursor of ब्रह्म सभा एंड लेटर ब्रह्मो समाज। अब देखिए ब्रह्मो समाज, ये राजा राम मोहन राय 1828 में एज ब्रह्म सभा, मतलब राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म सभा के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया था, लेकिन आगे चल के इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया 1830 में।
हाउएवर इट वाज नॉट हिज फर्स्ट सोसाइटी, आत्मीय सभा था। ब्रह्मो सभा established in 1828 as a former religious reform movement, later became Brahmo Samaj in 1830 under देवेंद्रनाथ टैगोर। 1828 में क्या हुआ, मतलब ब्रह्म सभा के रूप में वो हुआ, लेकिन आगे चल के ब्रह्म समाज हो गया। किसके अंडर में? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के उसमें। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया टू प्रोपोगेट ब्रह्म समाज आइडियाज। ठीक, तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अभी रनिंग वनिंग करके आता हूँ, फिर वो शुरू करते हैं। ठीक, बाय।